Yes, I'll repeat the question. There is a question says there is a normal vector whose magnitude is 8. This vector makes an angle 45 degree with x-axis, 60 degree with z-axis, and some acute angle with z-axis. That is here 45, 60, and gamma is the with the z-axis. You have to find out the equation of plane passing through root 2 minus 1 and 1 and normal to vector n. So for that I told you first we should calculate gamma. To get gamma, first we'll write L is cos 45, M is cos 60, N will be cos gamma. These are LMN, and then you know L square plus M square plus N square is 1. L will be cos 45. Cos 45 means 1 by root 2 whole square. Then M square. Cos 60. Cos 60 will be what? 1 by 2 whole square. Plus N square coming as 1. Then I'll write this is 1 by 2 plus 1 by 4 plus N square is coming 1. Or we should say N square is what? 1 minus 3 by 4. And what is N in that case? ये आपका 1 by 4 बचेगा तो N will be coming half. As you got N half, that means this is coming half. Clear? So we go for n vector now. What is n vector? That is the magnitude of n into n cap. N cap is the unit vector here. Magnitude n already given as 8. Then we think about the unit vector. Unit vector is Li plus Mj plus Nk. L हुआ आपका half I cap plus Mj. Sorry, this is 1 by root 2. Then plus cos 60, it will be half j, and then plus half k. This is your normal vector, and this normal is normal to the plane also. So can you get the equation of plane now? Equation of plane will be r dot n will be a dot n. N vector already we got, that is here. So r vector dot a times 1 by root 2 I cap plus 1 by 2 j cap plus 1 by 2 a cap equal to a dot n. What is a? A will be this root 2 I minus of j plus of k dot 8 into 1 by root 2 I cap one by root 2 I cap plus half j cap plus half a cap. This 8 cancel out from here. And now only the thing is you should simplify this. R dot 1 by root 2 I cap plus 1 by 2 j cap plus 1 by 2 k cap equal to. Now solve it please. Root 2 into 1 by root 2 is coming 1. Minus 1 plus half is minus of half. Then 1 into half, it is coming plus of half. So this get cancel out. This is the equation of the plane. Next, write down equation of plane in normal form. Equation of plane in normal form. Next topic, write down please. Equation of plane in normal form. Yes, definition write down please. The vector equation of a plane, normal to a unit vector n cap, normal to a unit vector n cap,
and at a distance small d, and at a small distance d from the origin, is r dot n cap is d, is r dot n cap is equal to d. Just check what it says. This is a plane we have. From where, on which if we draw the perpendicular from origin, यहां से आपने origin से इसके ऊपर एक perpendicular ड्रॉ किया. This perpendicular is having direction n cap. ये जो आपके पास normal vector आ रहा है, this has position vector n cap. And this distance we have d. This perpendicular distance we have d, या p कर लो इसको, small p ले लेते हैं. ये distance आपकी small p. Then the equation of plane will be r dot n cap is p. ये आपका result है जो आपको याद है. This equation we should have. सही इक्वेशन कब अप्लाई होगी? क्या कह रहे हैं? सही इक्वेशन कब अप्लाई होगी? When you have perpendicular distance of this plane from the origin, वो मालूम होनी चाहिए. Origin से इसके ऊपर perpendicular draw किया, that length is known, that is p. And whatever this perpendicular which you have drawn has a direction n cap. ये यूनिट वेक्टर दिया जाना चाहिए. तो इस नॉर्मल जो आपने ड्रॉ किया है, परपेंडिकुलर जो ड्रॉ किया है, उसका यूनिट वेक्टर n कैप डायरेक्शन मालूम है, प्लस द लेंथ ऑफ दिस इज. अगर आपको याद हो तो स्ट्रेट लाइन में आपने ऐसा काम किया था. ये स्ट्रेट लाइन होती थी, ओरिजिन से इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते थे. ये हमारी लेंथ होती थी p और ये होती थी अल्फा. अल्फा इज द एंगल दिस नॉर्मल मेक्स विद पॉजिटिव x एक्सिस. और याद हो तो ये इक्वेशन बनती थी x cos alpha plus y sin alpha is p. This was the normal form for the line. Here we want the normal form and that normal is coming r dot n cap is p. ये हमको लाना है. So how we do it? Just check here. First I'll take a general point p. Let the position vector of this be given as r vector. This is normal foot. This is a normal drawn, so foot of a perpendicular is n here. And I have joined this. This is the line in the plane. Now, as this line is in the plane, so np vector, अगर हम लें n to p, ये vector हम ले लें np vector. Will it be perpendicular to on vector or no? and p is any point on the plane. तो अगर आपने इसको इससे ज्वाइन किया तो ये लाइन हमेशा इस नॉर्मल के परपेंडिकुलर होगी. तो what I have in this case, np dot on vector is coming 0. ये वेक्टर np वेक्टर और ये on वेक्टर, they will be always perpendicular to each other. So as this is normal, so it will be normal to each and every line in the plane. तो ये हमने एक लाइन प्लेन में बनाई है, तो np वेक्टर and on वेक्टर they are perpendicular, and as they are perpendicular I should have np dot on is coming 0. np कैसे निकलेगा? पोजीशन ऑफ p माइनस पोजीशन ऑफ n. p की पोजीशन क्या है? r माइनस n का पोजीशन इज on वेक्टर
और ओ एन वेक्टर अगर आप निकालना चाहते हैं तो व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस पार्ट, दैट इज पी, और डायरेक्शन क्या है, एन कैप. So it will come out to be R P N cap dot O N vector. O N vector क्या है अभी आपने निकाला है, that is P N cap 0. Clear? P is a number here. So when you solve it, what it will come? R dot n cap P यहाँ आगे आ जाएगा. P n cap, so P is a scalar, तो R और n के बीच में डॉट प्रोडक्ट, P को हमने आगे लिख लिया, माइनस P into P square, and then what it will come, n dot n coming 0. 1 P can come out common and can be removed. P आप यहां से कॉमन निकाल रहे हैं और वो P आपका काट दिया आपने. एंड n कैप डॉट n कैप क्या होगा भाई, याद है I डॉट I, they are unit vectors coming 1, J डॉट J is coming 1. Why? Because they are unit vectors. और अगर याद नहीं है तो इसको ऐसे कर सकते हो, n dot n will be magnitude n, cos of the angle between them is 0. ये 1 होगा क्योंकि यूनिट वेक्टर है, ये 1 होगा यूनिट वेक्टर है, cos 0 is also 1, तो ये आपकी वैल्यू 1 आ रही है. इसका मतलब ये पार्ट आपका 1 हो गया. So what equation I got, R dot n cap is coming. This is the normal form of the plane. अगर हम इसको अब कार्टेशियन में कन्वर्ट करें तो क्या चेंज आएगा बताओगे? R will be normal general point xi plus yj plus zk. What will be the n cap? कोई बताएगा? N cap is a unit vector normal to it. हाँ जी, क्या लिखा जाएगा इसको? सर Li plus Nj plus K. Yes, Li plus Nj plus Nk. Whenever the direction is given by unit vector, the component will be Lmn. That is coming P. And now when you solve it, what it will come? Lx plus My plus Nz comes out to be P. ये आपकी कार्टेशियन फॉर्म हो गई. अगर आप स्ट्रेट लाइन लास्ट ईयर वाली पढ़ो तो वो भी यही थी. देखो ये cos अल्फा बनेगा कि नहीं, x cos अल्फा, यहां क्या बनेगा y cos बीटा. यहां ये वाला एंगल क्या होता था, 90 माइनस अल्फा होता था y एक्सिस से एंगल, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं cos ऑफ 90 माइनस अल्फा. तो ये बीटा की तरह काम होता है अल्फा, और ये हमारा बीटा. सो x cos अल्फा प्लस y cos बीटा, ये तो इक्वेशन 3 थी. अब की बार एक और ऐड हो गया, दैट विल बी व्हाट, z cos गामा कमिंग आउट. लास्ट ईयर हमारे पास दिस इज इक्वल टू p था, अब की बार ये तीनों है, इसलिए x cos अल्फा प्लस y cos बीटा प्लस z cos गामा इज p है. सो दिस इज द इक्वेशन वी कॉल एज नॉर्मल फॉर्म ऑफ द प्लेन. नॉर्मल फॉर्म जब भी ध्यान रखेंगे, नॉर्मल फॉर्म कभी भी लिखेंगे, ये तो जनरल पॉइंट होगा, दिस शुड बी ऑलवेज अ यूनिट वेक्टर. जब भी ये यूनिट वेक्टर होगा, ये आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन देगा, दैट इज p. व्हेनेवर इट इज, आपकी जो जनरल इक्वेशन थी, वेक्टर इक्वेशन जो थी, वो थी r डॉट n वेक्टर इज a डॉट n, ये थी. यहाँ n कोई भी वेक्टर था, इट वाज नॉट द नॉर्मल वेक्टर, इसलिए यहाँ पर कोई नंबर आता था विच यू डोंट नो, ओनली द नंबर वी विल से a डॉट n, कोई नंबर निकल के आता था. उसके लिए हमारे पास कुछ भी नहीं होता था, a होता था, उसके हिसाब से हम कैलकुलेट करते. बट अब यहाँ क्या कह रहा है कि अगर r डॉट, यहाँ पर यूनिट वेक्टर आपका अगर आ गया,
तो ये वाला जो पार्ट आपका कैलकुलेट होके आएगा, दिस विल बी द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। तो ये तो आपका वेक्टर इक्वेशन है, ये आपकी नॉर्मल इक्वेशन है, नॉर्मल फॉर्म ऑफ द प्लेन, दैट यू शुड कीप इट। इज देयर एनी डाउट? Write a question please. Find the vector equation of plane which is at a distance 5 unit from the origin. Which is at a distance 5 unit from origin. And I cap as the unit vector normal to it. I cap is the unit vector normal to it. मतलब ये कि प्लेन यहां कहीं है, ये प्लेन है, ये डिस्टेंस कितनी दी हुई है? दिस इज गिवन 5 इन द क्वेश्चन. I cap is the unit vector normal to it. So can you find out what is the equation this time? Yes, follow away. What are the informations? This is your n cap, normal, and this is simply P. So what my equation come? R dot n cap की जगह आ जाएगा I cap, come out to be 5. And if you want to convert this in Cartesian form, कोई मुश्किल नहीं है. We write this as xi plus yj plus zk dot I cap is 5. And now when you solve it, it will simply come out to be x is equal to 5. One more question right now, please. Find the vector equation of plane. Find the vector equation of plane which is at a distance of 8 unit from origin. Which is at a distance 8 from origin. And which is normal to the vector 2i plus j plus twice of k. Which is normal to the vector 2i plus j plus 2k. This is the normal we have. How much is the distance? This is 8 and this is the plane we have. And this here n cap which you have will be the normal, and he is saying normal to this plane. तो ये आपको normal vector दिया हुआ है, unit vector नहीं दिया हुआ है. This vector is normal to it. अगर ये vector इसका normal है तो पहला काम हमें क्या निकालना पड़ेगा? unit vector निकालना पड़ेगा. क्योंकि अगर हमारे को ये p की तरह यूज करना है तो इक्वेशन में यहाँ क्या आना चाहिए? r dot n cap is p आना चाहिए. नॉर्मल वेक्टर मेरा काम नहीं करेगा. नॉर्मल वेक्टर अगर यूज करना चाहते हैं तो फिर ये वाली इक्वेशन यूज करनी पड़ेगी, बट उसमें प्रॉब्लम ये आएगी कि मेरे पास पॉइंट नहीं होगा, इसलिए ये वाली इक्वेशन हमारे काम की नहीं रहेगी. तो नॉर्मल तो इसमें भी है उसमें भी है, बट उसमें हमको यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा. यहां पर हमारे पास कोई भी वेक्टर चल सकता है. So what we do in this case, first n vector is given, so I calculate what is n cap. N cap, when I calculate, this is vector divided by its magnitude will be 4 plus 1 plus 4. It will be root of 9. 3 हो जाएगा. So now the equation you can write r dot n cap, ये रहा n cap, 2i plus j plus twice k by 3 equal to p. P is given in the question is 8. This is the equation we have.
एंड बाय द वे इफ यू टेक दिस 3 दिस साइड, तब ये नॉर्मल फॉर्म नहीं रहेगी, क्योंकि आपका ये p नहीं रहेगा। तब ये कौन सी फॉर्म बन जाएगी? r, तब ये फॉर्म बनेगी r डॉट n इज d, d मींस a डॉट n। तो अगर आपका ये 8 आपने उधर शिफ्ट कर दिया तो ये आपकी नॉर्मल फॉर्म नहीं रहेगी। लेकिन उसने कहा है इक्वेशन लिखनी है, तो आप इक्वेशन ये भी लिख सकते हैं 2i प्लस i प्लस j, सॉरी 2k equal to 24. This is also the equation of that plane, this is also the equation. इसमें ये नॉर्मल फॉर्म है, ये आपकी वेक्टर फॉर्म। One more question right now, please. Reduce the equation r vector dot 3i minus 4j plus 12 of k equal to 5 as a normal form. Reduce this to normal form. इसको आपको normal form में convert करना है, and then find out how much distance it will have from origin. How much distance this plane has from origin. If you want to reduce this in normal form, I should have r dot n cap is p, but this is not a unit vector. So what I should do, if you want to convert this in normal form, we should convert this up, should convert in unit vector. Unit vector अगर convert करना है तो we will write r dot 3i minus 4j plus 12k whole divided by under root. ये आएगा आपका 9 plus 16 plus 144. And the same thing, because you have divided this, so we will divide this also. Whenever you reduce, इसको आपको यूनिट वेक्टर बनाना है तो इसके मैग्नीट्यूड से इधर भी डिवाइड कर दो, इधर भी डिवाइड कर दो। अब अपने आप ये एन कैप बन गया r डॉट 3i माइनस 4j प्लस ट्वाइस k बाय कितना बनेगा भाई ये 169 हो जाएगा। 169 मींस 30 और इधर क्या आ रहा है 5 by 30. And if they are asking what is perpendicular distance from origin, this is the perpendicular distance from origin. 5 by 13 is the perpendicular distance from origin. So this way you should know what are the what is the perpendicular distance from origin. One more thing they can ask in this question. What are the direction cosines here? In this equation, what are direction cosines? कोई बताएगा? What are direction cosines here? Yes, please. What are direction cosines? बताओ भाई. ये unit 3 by 13. 3 by 13. Yes, L will be 3 by 13. हाँ बोलो. M minus 4 by 13 and 2 by 13. We can ask the normal also, sorry, direction cosines also that you can calculate easily. Now write down on next topic please. Angle between the planes. Angle between planes. Next topic is we have to find out what is the angle between the planes we have. If we have two planes, this is one plane we have. This is the second plane we have. And my question is, what is the equation of this plane?
That means this angle we want. Angle between the two planes we want, where one condition is this plane's equation is r dot n1 is a1 dot n1. This is the plane's equation here. And this plane's equation is r dot n2 is a2 dot n2. So we have two planes and we have to find out what is angle between these two planes. ये angle हमको निकालना. So what I am going to do here, what is the direction of this plane? इस plane की direction कौन देता है? इसका normal देता है, तो हमारे पास इसका normal है. That is your n1 vector given in the question. Same way we have this plane also giving its direction, or this plane's direction will be given by second vector, that is n2. ये भी इसका normal है. ये रहा. Now check here. Whatever angle between these two planes will come, will it be same as the angle between their normals? क्या ये एंगल वही एंगल होगा जो इस प्लेन के बीच में है? ये लाइन इसके पैरेलल होगी प्लेन के, और ये लाइन इसके पैरेलल होगी. तो जो एंगल इन दो प्लेन के बीच में आ रहा है वही एंगल हमारा इन दो नॉर्मल्स के बीच में आएगा. और अगर आपको ये एंगल चाहिए, दिस एंगल इज थीटा, देन दिस इज आल्सो थीटा. So if you want the angle between the two planes, only the thing is you should calculate what is angle between their normals. अगर याद हो तो हमने अभी लाइन जो पढ़ी थी उसमें क्या कहा था? अगर लाइंस के बीच में एंगल चाहिए तो जो इसकी डायरेक्शन होती थी b1 और इसकी डायरेक्शन होती थी b2, ये आपके पास इक्वेशन होती थी r is equal to a1 plus lambda b1. इसकी होती थी r is equal to a2 plus lambda b2. This is b1 and this is b2. I told that this angle, whatever you have between b1 and b2, is the angle between the lines. Same way, whatever angle between their normals will be the angle between the planes. और अब अगर आपको ये एंगल कैलकुलेट करना है तो आप क्या करेंगे? फॉर्मूला इज विद यू. cos थीटा is n1 dot n2 by magnitude n1 magnitude n. This is the angle between the two planes. So whenever they say angle between the two planes, we should know what their normals are. जो भी इनके नॉर्मल होंगे उनके बीच का एंगल आप कैलकुलेट कर लो. You will get angle between the two planes. Is it okay? तो एंगल बिटवीन द टू प्लेन्स के लिए ये रिजल्ट आपको याद रखना है. By the way, the two planes are perpendicular to each other. अगर दोनों प्लेन आपस में परपेंडिकुलर हैं तो इसका जो नॉर्मल आएगा और इसका जो नॉर्मल आएगा, दे विल आल्सो बी परपेंडिकुलर. n1 and n2 will be perpendicular, and then I should have n1 dot n2 comes out to be 0. So if two planes are perpendicular to each other, we should have n1 dot n2 is 0. And if the planes are parallel, ये प्लेन और ये प्लेन, दोनों प्लेन अगर पैरेलल हैं, then what I should have in this case, whatever normal to it, that is n1, whatever normal to it, that is n2, they will be also parallel. So I should say n1 is lambda times of n2. We have done in lines also this thing, but there it was b1 and b2. Now here we have n1 and n2 normals here. So when you want the angle between the two planes, we should have cos theta is n1 dot n2 by magnitude n1 magnitude n2. Same way when they say they are perpendicular, what condition? n1 dot n2 is 0, and if they are parallel, n1 is equal to lambda times of n2. By the way, if this equation is given in Cartesian form, that means a1x plus b1y plus
C1z प्लस D1 इज 0। ये आपकी कार्टेशियन इक्वेशन प्लेन की है। दूसरी आ रही है A2x प्लस B2y प्लस C2z प्लस